Hello बच्चों, let us read the question. An alpha particle of mass m suffers one-dimensional elastic collision with a nucleus of unknown mass. After the collision, the alpha particle is scattered directly backwards, losing 75% of the kinetic energy. The mass of the unknown nucleus is option A m, option B 2m, option C 3m, option D 3 by 2 m. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है key concept of this question is conservation of energy and momentum in an elastic collision. तो अगर हम दो पार्टिकल्स लेंगे जिसका मास m1 एंड m2 है एंड इफ़ दे आर अंडरगोइंग इलास्टिक कोलिशन, तो उनका मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशंस हम कुछ ऐसे लिखेंगे. इफ़ m1 and m2 are two particles which are undergoing elastic collision, then m1 v1i plus m2 v2i is equal to m1 v1f plus m2 v2f. This is the equation for conservation of momentum. तो सिमिलरली एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन भी कुछ हम ऐसे लिखेंगे. हाफ m1 v1i स्क्वायर्ड प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ m1 v1f स्क्वायर्ड plus half m2 v2f squared. This is the equation for conservation of energy. तो यहाँ पे v1i and v2i, they represent the initial velocity of m1 and m2 respectively. और v2f and और v1f and v2f ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 रिप्रेजेंट करते हैं. फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली. तो ये दो इक्वेशंस है, ये कह रहे हैं कि मोमेंटम, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, and similarly total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे. गिवन पॉइंट नंबर 1, an alpha particle undergoes elastic collision with a nucleus point number 2, the alpha particle is scattered backwards losing 75% of its kinetic energy. तो हम मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल को m1 से लिखेंगे. लेट m1 be the mass of the alpha particle
capital M be the mass of the nucleus, V1I and V1F initial and final velocity of alpha particle, and V2F be the final velocity of the nucleus. तो सबसे पहले हम initial velocity of the alpha particle के with regards to that हम final velocity of the alpha particle and nucleus को calculate करेंगे. So from conservation of energy, half m1 v1f squared is equal to 25% of half m1 v1I squared. क्योंकि the alpha particle 75% of its initial kinetic energy को ट्रांसफ़र कर रहा है न्यूक्लियस को, तो बचा 25%. So the final kinetic energy will be 25% of the initial kinetic energy. So this is half m1 v1f squared is equal to 0.25 half m1 v1I squared. तो यहाँ पे हाफ m1 दोनों साइड्स कैंसिल कर सकते हैं. So v1f squared is equal to 0.25 v1I squared, or v1f is equal to square root of 0.25 v1I. Similarly हम the nucleus का final velocity इसी प्रकार calculate कर सकते हैं. Since the nucleus gains 75% of the initial kinetic energy of the alpha particle, so we can write half capital M v2f squared is equal to 75% of half m1 v1I squared. This can be written as half m v2f squared is equal to 0.75 half m1 v1I squared. तो हम दोनों साइड्स हाफ कैंसिल कर सकते हैं. So v2f squared can be written as 0.75 m1 divided by m into v1I squared, or we can say v2f is square root of 0.75 m1 divided by m into v1I. तो अभी हम conservation of momentum का equation लिख के we can try and calculate the value of m. From the conservation of momentum, we have m1 v1I
प्लस ज़ीरो, क्योंकि न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट में है, उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, सो दिस टर्म बिकम्स ज़ीरो। और क्योंकि कोलिजन के बाद दी अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड बैकवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो चुका है, तो वी विल हैव अ माइनस साइन हियर, m1v1f प्लस कैपिटल M v2f। अभी हम v1f और v2f को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ v1i, सब्स्टिट्यूटिंग for v1f and v2f, we have m1 v1i is equal to minus square root of 0.25 m1 v1i plus square root of 0.75 m1 by capital M into m v1i। तो इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम v1i कैंसिल करेंगे, सो वी नाउ हैव m1 is equal to square root of 0.25 m1 minus sign plus तो ये m it has got cancelled with the m in the square root has got cancelled with the capital M outside, so हमें 0.75 mm under square root मिलता है। So now I can club this m1 on both sides यहाँ पे, so this will become m1 plus square root of 0.25 m1 equal to square root of 0.75 m1 capital M. So this is nothing but m1, square root of 0.25 is 0.5, so m1 into 1 plus 0.5 is equal to square root of 0.75 m1 m. So I will square both sides, तब हमें मिलता है m1 squared into 1.5 squared is equal to 0.75 m1 m. So I can cancel m1 here with the m1 squared. So square root of 1.5 squared is 2.25 m1 is equal to 0.75 capital M, or the mass of the nucleus can be calculated as 2.25 divided by 0.75 m1. So we get the mass of the unknown mass of the nucleus is found to be 3 times m1. तो हम क्वेश्चन पे वापस जाके we will mark the correct answer. So the mass of the unknown nucleus is option C, 3m. Hope you have understood it well.
Best of luck.